Hello everyone. How are you all? How are you all? Hi, sir. How are you, sir? Fine, fine. So tell me, any problem till yesterday? No, sir. All clear? Yes. Great. सर सीसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है. कल तक टाइम है ना, 11 बजे तक. कल ट्राई करो, उसके बाद लेंगे एक एक क्वेश्चन. ठीक है? जब तक ये क्वेश्चन वैलिड है तब तक ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आइडिया आएगा कि हो क्या रहा है. ओके सर. Okay. After that I will show if any problem is there. ओके सर. Okay. थैंक यू. Any more problem? Any other doubts? Any other something you are having? Okay, yeah. So today we'll be taking the topic of just one example of time complexity we will see today. Okay, a bit complex. Then we will take the topic arrays. We'll start with the topic arrays. One thing from now, I will strongly request everybody, whatever CCs are being given to you, whatever assignments are being given to you, at least solve them. No, there is no formula to solve time complexity. Okay, follow what we will take from this, from the previous classes, whatever we have started, follow each and everything. There is no formula you will ever get to solve time complexity. It's impossible. The traditional method is only to be followed. Okay. Okay. Yes, something called Master's theorem is there. Okay. You have to find the relation and then you have to apply Master's theorem.
But if I discuss Master's theorem here, most of you will get confused. No point of discussing that. This is a complete theorem. Okay, the name is Master's theorem. Why this is used? For the sake of calculating time complexity. How many of you are from computer science background? You can either give a Python file or text file. Okay, no problem on that. Master's theorem आती है जुनैद? नो सर। कौन सी सर year एक में? डाउट था हाँ बोलो। सर, अभी डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। अच्छा सर अच्छा। ये डेटा स्ट्रक्चर में जो भी जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम रहते हैं वो किधर यूज होते हैं? हर जगह यूज होता है, बड़े बड़े सिस्टम्स में एल्गोरिदम से चलता है। क्या क्या कौन सा एल्गोरिदम लगाएंगे कि हमारे सिस्टम्स बेटर चलें, बेटर एफिशिएंटली चलें? ये तो हम जो पढ़ेंगे वो तो बेसिक लेवल के एल्गोरिदम्स है, बेस ऑफ एल्गोरिदम्स. Further, more complex and advanced algorithms, data structures will be used once you go to the industry. Okay. Like Google search, very advanced algorithms runs there. Amazon searching, whatever you do, data uh, involved once you to update your availability of your particular product. Okay, those are present there. Moreover, the system that Amazon uses entirely, that's very much complex system. Okay, those things are unrelated here, but yeah, once you step into the industry, you will get to know how thing happens there, and how much that time, how the complexity is taking part. All of you will be getting once you step into the industry and get to work in some interesting problems. Okay. Okay, let's start for today. Okay. Okay, fine. Let me just set up everything. Only 20 students. Okay, but I have to start. Okay, giving you a loop for, let's say, a equal to 0, I have taken. Next, I will take an input n. Int input, correct? Okay, done that. Next, what we will do? What we will do is that run a loop. This time, let me run a while loop. While, and here let's I equal to 1 initially. Okay, let me write all of this in some better way. Okay, I equal to 1. Fine. I start with I equal to 1. Now while I is less than equal to n, okay, a equal to a plus 1. Okay, now next step, what I will do, I equal to I into 2. At the end, I will do print a. Okay, all of you see this problem for 2-3 minutes. Try what's happening. Okay, for 2-3 minutes, try to calculate what's the time complexity of this problem. Then I will show you how to solve this problem. Okay, just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. Yeah.
Okay, let me share it again. Okay. Uh, yeah, this is the code. And now please try interpreting what's happening. All of you try to solve this. 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, think of it, how will we solve, and try coming up with an answer. At 9:17 I will start solving this problem. Till then, all of you please try solving, and what's the answer, try that. Okay, most of you are coming up with answers like big O of n, that yeah, I is constant, a is equal to a plus 1 is constant. Okay, let's take this problem. Okay, let's code it and let's see what's actually happening. Yes, only one person who came up with the correct answer. What we have written, for initially a is 0, I is 1. Okay, n I will be taking an input from the console. Next, for I have done what, run a while loop. While
I is less than equal to n. Run this loop. This is the condition for running the loop. Okay. Do what? A equal to a plus 1. Add 1 to a. And then do what? Multiply I with 2. Simple. Now at the end, I will be printing the value of a that I am getting. Okay. Let me clear everything. Let's run. Now give me what value of n you want. Okay, let's take it 10. 4 is my answer. Correct or wrong? 4 is my answer. Correct or wrong? Okay. See what is happening. A is 0. What's happening next? I is initially 1. I is initially 1. Next, taking input n, value of n is 10. First, while I is less than equal to 10, true or false? 1 is less than equal to 10, true or false? True, right? What will happen? A will be increased by 1. Now next, what will happen after A is increased by 1? Next, I equal to I into 2. What will be the new value of I? 1 into 2. Correct or wrong? Correct or wrong? How many of you say correct? How many of you say wrong? Next value of I will be 2. Next, okay, fine. Now, okay, this is 2. 2. Next, what will happen? It will go back to the while loop. Check the condition. Now see, 2 is less than equal to 10 or not? 2 is less than equal to 10. True or false? True. What will happen? Add 1 to A. This becomes 2. And what will happen? Value of I will be 2 into 2. Correct or wrong? 4, right? Now check again. It will again come back to this while loop for checking the condition. Is 4 less than equal to 10? True or false? True, right? What will happen? Add 1 to A. Add 1 to A. Sorry. Add 1 to A. Value is 3. And multiply. I will be changing to 4 into 2. 8. Okay, done. Now again, it comes back here to check the condition. 8 is less than equal to 10. True or false? True, right? What will happen? Add 1 to A. A's value is 4. Add. Now multiply I with 2. What will be the new value of I? 8 into 2, 16, correct? Now it goes back again to the while loop for checking. What will happen? 16 is less than equal to 10. False, right? Loop terminates here. And finally, I print the value of A. What's the final value? 4. So I am getting the correct result. But my question is, loop, everyone I hope got how the loop is working. But my question is, what's the time complexity of this? How can I find the relation? How many types? Okay. How many times the loop is working? Can anybody tell me? Loop is getting executed how many times? 4 times, right? That's why value of A is getting incremented 4 times exactly. True or false? Loop is working 4 times. Loop is getting executed 4 times. That's why value of A is getting incremented by 4. True or false? True or false? No response.
what I am saying is that while loop executes 4 times. Because of this only, I am getting that inside. Initially, my A was 0, 4 is getting added to it. 4 times 1 will be added inside my A. Is it true? True, right? That's why I am getting the value 4. Okay. Now the question is coming, what's the time complexity? How will I calculate that? How will I calculate that? We go of 4. How will you represent that in terms of n? Can you tell me? Okay, let me show you something. Not big O of 1. N is variable, right? If I change, okay, if I change, नहीं n स्क्वायर तो नहीं होगा. n स्क्वायर होने पे वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आती? n स्क्वायर होने पे a की वैल्यू 100 आती 10 के लिए. 100 टाइम्स while लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ता, तब जाके एक, ओके, तब जाके n स्क्वायर होगा. Now see, 2 to the power 0 equal to 1, right? 2 to the power 0 equal to 1. Can I say 2 to the power 0 equal to 1? For this value, while loop runs once. While loop will run for this. Now again, 2 to the power 1 equal to 2. For this value of I, again while loop will be running. True or false? Now for next, I equal to 2 square equal to 4. While loop will be running. True or false? For all this. Now next, I equal to 2 to the power 3. 2 to the power 3. What is happening? What's happening? It is equal to 8, right? While loop will run for sure. Okay, now next, 2 to the power 4. 16. Here the loop terminates. Why? Because 2 to the power 4 is greater than the value of n. Am I saying correct or wrong? Am I saying correct or no? Correct or wrong? 2 to the power 4 is greater than n. Whenever I am getting some power of 2 that is greater than n, then only my loop is getting terminated. Can I say in general, see in general, for this code, for some 2 to the power x, if this is greater than n, the loop will terminate. Can I say this? In general, I take any value of n, whenever some power x of 2 will be coming, such that this entire value is getting greater than n, what will happen? The loop will terminate. Am I saying correct or wrong? Just give me 1 minute. Some background noises are coming. Let me see that. Okay, yeah. Let me share. Yeah. So what we can say in general, for any value of n, my loop terminates when I get a power x. I get a power x of 2 such that 2 to the power x is getting greater than n. Okay. So what this x is, can I say after performing x steps, after performing x number of steps or x operations exactly, my loop will terminate.
True or false? After performing exactly X steps, my loop will terminate. True or false? Now, how can I find the value of X? Can anybody tell me? Okay, so for running my loop, how many times this particular loop will be working? 2 to the power X less than equal to N. This is the, for all values of X such that 2 to the power X is less than equal to N, what will happen? While loop will be working. While loop will be getting executed. How can I find the X? And whenever any value X comes such that 2 to the power X is greater than N, my loop will terminate. This is my condition. How can I find this X? So we can say that X is X number of times this particular loop is working. Fine. How can I find this X? Apply log on both sides. What log on both sides? Log of 2 to the power X will be greater than log of N. Now, Nishant, please turn off your video. Now, what will happen? X comes outside. Log 2 greater than log N. Okay. Let the base of my log be 2. This will get cancelled out. And what? X is a value that is greater than log N. Okay. X is greater than log N. This is the value I am getting as per my expression. So for this value of X, I can say that my loop will get terminated for this value of X that is greater than log N. So what's my limit? What's my limit? I can say log N minus 1 should be my limit such that at log N minus 1th step, my last loop will be executed. Can I say X is a value which is greater than log N such that my loop will terminate here. So at X minus 1th step, my loop will be last executing. At step X, loop terminates. Okay. So we can say that X minus 1 is the last step when my loop will be executing. Okay. So this is greater than log N. So safely we can say that my complexity, how many X is exactly getting performed? How many times this, how many times the loop is getting performed? I can safely say that it is big O of log N. Now tell what's the issue? What's the problem with this question? At step X, when it is going greater than log N. Okay, let me just wipe everything out first. See here, what we have got. X is greater than log N, right? That means when X is at step X, my loop stops working. So value of X should be greater than or equal to log N or not for loop to be executed. Whenever value of X is less than equal to log N, my while loop will keep on getting executed. Right? So what is the maximum value of X such that loop is getting executed? Maximum value, it is log N, right? Whenever X is going greater than log N, the loop terminates. No more operations will be done here. So what's the maximum number of operations we are performing here? X.
x less than equal to log n, or we can say safely say maximum number of operations we are performing here is log n. Okay, maximum number of operations is what? Log n. So what's my complexity? Big O of log n. Any problem? Yes, Abhishek, tell me. सर दो तीन डाउट है मेरे। बोलो। पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि जैसे कि जो n है, n मतलब हाँ। जो भी हमें इनपुट दिया जाएगा, राइट सर? ठीक है। अगर अगर उससे उससे हमारा ये जो x है ये अगर ऊपर जाता है, अगर उससे बढ़ा जाता है तो हम इसे कह देंगे बिग ऑफ लॉग n, राइट सर? सॉरी, फिर से रिपीट करो। वैल्यू ऑफ n, n मैंने इनपुट लिया, ठीक है, फिर? हाँ जी सर। और अगर इनपुट से हमारा बढ़ा जाता है जो भी जैसे कि आपने बताया ना जो x है, वो अगर इनपुट से बढ़ा जा रहा है हमारा, इनपुट से नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स। मैंने x इज द नंबर ऑफ स्टेप्स आई रिक्वायर, ये मैं काउंट कर रहा हूँ कि ये लूप एग्जैक्टली कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ये तो चलो कांस्टेंट में हो जाएगा, वन ऑपरेशन में ये सब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो नंबर ऑफ टाइम से ऑपरेशन हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है? ये जो वन ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ कितनी बार कर रहा हूँ? x टाइम्स मैक्सिमम x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है? log n है। ठीक है, तो जैसे कि सर आपने n जो था वो 10 दिया, राइट सर? और अगर ये जो स्टेप्स हमारे ये 4 पे टर्मिनेट हो रहा है, यस, अगर ये 10 से ऊपर जाता लाइक 16 या 24 होता तो ये बिग ऑफ लॉग n है कि नहीं? ये तो भी बिग ऑफ log n है। अच्छा, ये किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए बिग ऑफ log n है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पर्टिकुलर कोड ठीक है, ठीक है। ओके, ऑल डन, अंडरस्टूड दिस पार्ट? When the time complexity will be log n? Hello sir. बोलो। Sir, repeat this. Okay. Sir, x is equals to log n ये फॉर्मूला है या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन है, फॉर्मूला नहीं है, कैलकुलेशन है। That means sir x is equals to log n जो है ये जो प्रोग्राम है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर है। Yes, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर है। log n x मतलब x is the maximum value, x is the maximum number of times my while loop will be running. तो उसकी वैल्यू क्या है? log n है, मुझे वो नहीं समझा। क्या आया था हमारा? 2 to the power x क्या हो रहा है? should be greater than equal, lesser than equal to n for my loop to be running, correct? लूप रन करने के लिए क्या कंडीशन है? 2 to the power x को लेस देन इक्वल टू n होना पड़ेगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैसे मालूम करेंगे? दोनों तरफ log लगा दो विद बेस 2, अप्लाई log बोथ साइड्स विद बेस 2, व्हाट विल हैपन? 2 to the power x लेस देन इक्वल टू n, और सर log का यूज क्या लेस होता देन है? इक्वल टू log to n। क्या हुआ? जो log हम यूज कर रहे हैं बोथ द साइड, उसका यूज क्या होता है? मतलब हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं log? ये 2x की वैल्यू निकालनी है ना, log Yes, क्यों यूज sir. करें? क्योंकि ये x इधर आ जाएगा, x शिफ्ट होके इधर log 2, ये एक फॉर्मूला होता है। log अगर बेस भी b है और तुम्हारा उसके ऊपर जो नंबर है वो भी b है तो ये 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, log मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मेरे को लॉग्स के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा log के लिए, तो logarithms। और सर लॉग की मतलब लॉग की वैल्यू कुछ होती है क्या? नहीं, log की नहीं, ये जस्ट log के टर्म्स में हमें लिखना है। ठीक है, log के टर्म्स में मुझे कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करना है। सर पूरा एक बार वापस से रिपीट करिए ना, कंफ्यूजन हुआ अभी भी है थोड़ा। तो ओके फाइन, ठीक है, रिपीट करते हैं, चलो। ओके, यस अमर बोलो। Sir, can you please repeat this code again? Yeah, I'm cutting. Go. Firstly, let me take how the time complexity is coming. Okay. What I said, how it had happened. First, value of I 1.
Next, n was the value of 10. N, I have given value of n to be 10. Now a was initially 0. True or false? A was initially 0. Now next, what will happen? First, 1 is less than equal to 10. Start the while loop. 1 is less than equal to 10. True. Do what? Add 1 to a and increase the value of I. Multiply 2 with the value of I. This is what I am doing, right? Next, what will happen? This will go back to the while loop. Now next, is 2 less than equal to 10? True, right? What will happen? Increase value of a by 1 and do what? Multiply with I. Whatever value I is having, multiply with that 2. Now next, check. 4 is less than equal to 10. Why? This will go back and we'll check. I is less than equal to n or not. Okay. See. 4 is less than equal to 10. Again true. What will happen? What will happen? Increase value of a by 1 and multiply 2 with a value, whatever value I is having, multiply with that 2. Done. Next, again it will go back. See, what's the value of I? 8. Less than equal to 10 or not? True. Increase the value of a by 4, a by 1. So what's the new value? 4. And multiply whatever value I is having to that 2. Okay. Now see, what's the value of I? 16. Is it less than equal to 10? No, right? So loop terminates here and finally I print the value of a, that is 4. Code is clear to everyone? How the code is running? How the code is running, is it clear? Now see. So now, just see here. पहले वैल्यू 2 into 2 मतलब 4 था ना, फिर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. Yes, tell me, Aminul. Sir, can you hear me now, sir? Yes. Sir, do repeat once again, sir. Okay, wait. Just wait a bit. I will be repeating it once again, the code. But before that, let me discuss the time complexity. Okay, sir. Okay, yeah. Yeah, Nishant, bolo. Yes, sir. Nishant, ये- बोलो. yes, sir. सर मैंने सर 10 इनपुट ले रखा है ना सर. इनपुट ले रखा है. यस सर. Okay. 10 सर. और कुछ? ओके सर. नो सर. Okay, yes. ठीक है. चलो. So what's the observation we have got? I equal to 1 while loop will run. I equal to 2 while loop will run. I equal to 4 while loop will run. I equal to 8 while loop will run. Okay. This is what we have seen now. While loop will run when? At I equal to 1, I equal to 2, I equal to 4, I equal to 8. These 4 values. True or false? True or false? Now see. Can I represent 1 as 2 to the power 0? At I, can I represent 2 as 2 to the power 1? Can I represent 4 as 2 to the power 2? And can I represent
8 as 2 to the power 3. Can I represent this? Is it correct? 1 equal to 2 to the power 0, 2 equal to 2 to the power 1, 4 equal to 2 to the power 2 square, and 8 equal to 2 cube. So can I say loop will work, while loop will run till the time 2 to the power x. In general I am talking. In general, the loop will run till the time 2 to the power x is less than equal to n. True or false? While loop will be running when? Till how many time? Till the time in general 2 to the power x is less than equal to n. False or true? Now tell me. Now see, what is the maximum value of x? Then I can have maximum value such that a loop is running. How will I find? Apply log 2 both sides. Log 2 to the power x is less than equal to log 2n. Apply log to both sides. This is coming out to be what? This is coming out to be what? X equal to log 2n. X is lesser than equal to log 2n. So what can be the maximum value? This log 2n. X is, okay, how many times my loop is running? What is the maximum number of times loop will be running? Maximum number of times loop will be running? Log 2n. Okay, so what's my time complexity? Big O of log 2n. No need to write 2 here. You can simply write big O of log n. By default, we can say that, yeah, it is log n. No problem on that. Is the complexity part clear now? हाँ बोलो, Memon. हेलो सर। Yeah, tell me. सर वेरिएबल को एक्सेस करने को भी टाइम का मतलब एक फंक्शन काउंट होता है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? वो ऑलमोस्ट वन ऑपरेशन ही लगता है, ज्यादा नहीं। हाँ, तो वो ये कैलकुलेशन में उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब i = 1 जो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है ना, ये तो 1 अगर काउंट कर भी लिया ना, तो वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कितना कर रहे हो? बिग ऑफ 3 ऑपरेशन होगा ज्यादा से ज्यादा इन तीनों को मिला के। यस सर। तो क्या होगा? बिग ऑफ Yes, लॉग sir. एन, लॉग मैं मानता हूँ log n + 3, तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। कहा था ना कांस्टेंट को, कांस्टेंट कहीं भी हो उसको नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ वेरिएबल के साथ जो टर्म एसोसिएटेड है उसे ही रखना पड़ेगा बिग ओ नोटेशन में। तो इसीलिए मैं और नहीं लिख बिग रहा। ओ नोटेशन में जो भी कांस्टेंट से उसको हटा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड सर यहाँ log 2 ब्रैकेट 2 हेलो, हेलो, हेलो बोलो। सर, Your voice is not coming. Your voice is not coming. My voice is coming clear. Your voice was not. Yes, sir. Your voice is clear. Okay, now tell me, any problem how we calculated the time complexity? How we calculated the time complexity? Any problem? No, sir. All clear. Okay, all of you, this is my, whenever you see that constantly you are multiplying something, 2, okay, 3, sorry,
such kind of 2 multiplication is constant. 2 into 2, first it will be 2. Okay, yeah, we'll take this later. If such kind of code you encounter anywhere, keep that in your mind that log n term will be coming. Okay. If such kind of code that I is getting multiplied by 2, what will happen? Log n will be coming. Okay. Now let's try with another code. Okay, yeah. Who was having problem with the code? Understanding the code. Who was having the problem? What I said, A is initially 0, I is 1. N is my input. Okay. I have taken n equal to 10 initially, while I is less than n. Okay. Now come to this while loop. While I is less than equal to n. So 1 is less than equal to 10. True, right? First, what will happen? Increase A equal to A plus 1. That means whatever is the value of A, to that add 1. Okay. Now next, do what? Multiply I with 2. So what's the next value? 2. Okay, fine. Now see, is 2. It will come back here to check the condition. Is 2 less than equal to 10? True, right? What will happen? Value of A, increase the value of A by 1. And multiply I with 2. What's the new value? 4. Again, it will go back and check the condition. Now see, is 4 less than equal to 10? Again, true, right? Do what? Add A, add 1 to A. And multiply 2 with I. What's the new value? 8. Sir, here I did not understand. A is equal to A plus 1, I is equal to I into 2. Then So we how are will you increase the value of A and I? I said with each loop, with each iteration of while loop, do what? Add 1 inside A. Add 1 inside A. And whatever is the value inside I is, to that multiply 2. This is the meaning of it. Sir, Now we getting are it? yeah, sir, we on taking input. That letter is equal to n now. Yeah, input is n. And I is Rest 2 I have initialized. okay, sir. Explain. Okay. Next, what will happen? Next, again, it will go back and check the condition. Is 8 less than equal to 10? True again, right? What will happen? This line will be executed. A equal to A plus 1. That means add to the current value of A 1. New value will be 4. A will be updated to 3 plus 1, 4. Here, And next line again, I equal to I into 2. What will happen? Whatever is the value of I, to that multiply 2. New value will be 16. Now again, it will go back and check. Is 16 now? Is 16 less than equal to 10? False, right? Now the loop terminates here. And finally, I print the value of A. Okay. Clear or not? Time complexity part as well as the code part. Clear or not? Understood this part or not? Please tell me. explain once again, sir. In 1 minute. Which one? Which part? Total while how will while working.
A equal to 0 initially, I equal to 1. N's value I have taken to be 10. Now check. First loop starts here. 1 is less than equal to 10, condition will be checked. Now next word, A equal to A plus 1. That means current value of A is 0, to that add 1. And update the value with the next value, with the updated value. A now will be taking the value 1. And I, next line, I equal to I into 2. What will happen? Whatever is the current value, to that multiply 2 and store that inside I. What's happening? I will be having the new value 2. Is it? Now you are getting what's happening? Sir, here I is equals to A is equals to A plus 1. We are giving input. Then that letter plus 1. I am not giving input. I am utilizing the current value of A. To that I am adding 1. Whatever is the new value, I am storing inside the variable A. Getting it now? Why I will give the input? Input is here only. Only one input I am taking. Once I have declared A, its current value will be used. No further new input you will be getting. Yes, Abhishek, tell me. सर सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा. बोलो. जैसे वो 8 into 2 कर रहा है, ठीक है सर? तो 16 होने पे वो लूप ब्रेक कर देगा. हाँ. तो सर जब वो 8 into 2 कर रहा है तो वो स्टेप वो काउंट कर रहा है, मतलब A की वैल्यू वो 4 अब हो जा रही है ना? जब वैल्यू I की n से ग्रेटर होनी पड़ेगी ना, तब जाके लूप क्या होगी? लूप टर्मिनेट होगी, ब्रेक हो जाएगा लूप. हाँ. तो उसके लिए वो स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा. अच्छा, 8 into 2 जो स्टेप है वो परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद वो नहीं काउंट कर रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है. ठीक है ना, उसके बाद काउंट नहीं कर रहा है. ठीक है सर. ठीक है. Okay, who is still now confused? Whenever you get some expression like this, firstly, let me simplify. Whenever you see that, okay, any 2 to the power x is there, that has to be less than n. Simply assume that my complexity is coming to be log n. This what can you remember? Else you have to learn log for this. Whenever you are getting that, okay, 2 to the, for calculating your number of operations, 2 to the power x is less than equal to n, such kind of thing is coming. Okay, simply just write blindedly that log n is my complexity. Fine. Now no need to apply any log and all, just remember that log n is my complexity. When 2 to the power x is less than equal to n, certain kind of expression is getting formed. Okay. Sir, I have a doubt. Yeah, tell me. Sir, what does log n signifies? Number of say operations. that it is complexity, but is there any? So, but if we say in literal sense, is there any meaning to it? Log n means whatever is my value of n, how many operation I will perform, that will always be equal, less than or equal to log n. That's what the meaning is. For performing my code, always log n number of operations less than or equal to log n operations I will perform. This is the meaning of it. Okay. 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 Any other thing you want? Can you remember this, that whenever such kind of expression 2 to the power x less than equal to n, I will be forming just one thing. Log n is my complexity. That's all. ये हो जाएगा. Else you have to learn a bit of logarithm. Shall I move ahead? Any doubt? Any other doubt? Yes, Memon, tell me. Sir, can you please explain some basics of logarithm? It's not a class that is dedicated to a logarithm. Okay, I will take that in the doubt class if necessary.
Okay, else all operation Sir- one by one I have to explain. That's not possible here. Because that 2x log 2x, that part is confusing. Log 2n. Okay, one thing remember. Log base A, this is the base and this is the number we have. Okay, whenever base and the number is same, it turns out to be 1. Okay, and whenever you represent log of base this, okay, and any number, whenever log is there with base b and b to the power x is there, okay, this changes to x, this equals x. Okay, can you remember this? Whenever log with a base b and the number is b to the power x, what will happen? It will be equal to x. Is this rememberable? This is the basic of log that it says, rule of log. Yeah, Abhishek, tell me. सर ये b की पावर x की जगह कुछ और भी हो सकती है? हो सकती है. अच्छा, और and that will not be equal to x, right sir? Nah, that will not be equal to x. Okay sir, so the sole motive of this is if log b की पावर अगर b की पावर x है तो वो हमेशा is equal to x होगी. x के बराबर होगी. Okay, yeah, exactly. Okay sir. Fine, let me move ahead. All done here? Tell me first. Sir, if we will write this I is equal to I into 2 in the place of 34 line and 34 line on 35th line, then the Yeah. answer will be 4 or 3. Which one? I equal to? Like we will interchange the 34th and 35th line. Still Hello, four, sir. Still 4 will be printed. Yeah, tell me. So for time complexity, first we have to understand how the loop is working, and then we have to use the logarithm in it, and then we have found the time complexity, right, sir? Yes. Okay, exactly. sir. Exactly. Hello. Yeah, tell me. तो भी आंसर 4 ही आएगा. सर वो मतलब फिर पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि आई की नहीं, वैल्यू break नहीं चेक कर होगा. लेगा तो क्या होता है लूप के अंदर टिल द लास्ट लाइन, लूप के अंदर सारे लाइंस पहले एग्जीक्यूट होते हैं, सारा लाइन होगा फिर ही यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा. लेकिन वो a+1 तो उसने 4 प्रिंट कर दिया, लेकिन आई बाद में बढ़ गया. तो क्या हुआ? सारा लाइन हुआ तब ना. इसको ऊपर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सारे लाइंस होंगे एग्जीक्यूट तभी जाके वापस कंडीशन चेकिंग होगी. ठीक है. ओके. लूप के अंदर मींस वो फुल लाइन तक चेक करता है, वो ब्रेक नहीं करता है. बिल्कुल 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 ब्रेक नहीं करता है. ओके, थैंक यू. Yeah. Okay, let's move ahead with some other problem. Let me take some other question here or again. Okay. Okay, let me write another loop. Okay. Yeah, let's replace this one. Okay, let it be there. Let again be a equal to 0, I equal to 1. Not now, not with break example as of now. Okay. N equal to int input. Okay, taken in. Now for let's say j in range n. Now inside that I will be running a while loop. While I is less than equal to n. Do what? A equal to a plus 1 and I equals okay, yeah, let's define I here. Let's not define it outside, but let's define I here. Okay, let's define I here. I equals I into 2. This part is done, and then after end of all loops, let's print A. Okay, let's give the value 10 now. I'm getting the output to be 40.
take 2-3 minutes to think of this code. Then we will discuss the how the code is working and what's the time complexity. Okay, any idea? Yeah, one correct answer. Only one correct answer. J is the outer loop, while is the inner loop, right? J is the outer loop, while is the inner loop. Correct or wrong? J is the outer loop, while is the inner loop. Correct or wrong? Now see, now tell me how this loop will be working. Okay, for J equal to 0, what will happen? I will be initialized to 1. I got initialized to 1. Now check. J equal to 0, I got initialized to 1. Now while loop will start, I is less than equal to n. First it will be checked. So what's my value of n that I have taken? 10, right? Now till first value of n is 10. First check, 1 is less than equal to 10. True or not? And what's the value of a? A is 0. What will happen? Increase the value, add 1 to a, add 1 to a and multiply 2 with I. True or false? Done. Correct or wrong? Next, what will happen? It will go back again to the while loop. Okay, yeah, see here. Go back again to the while loop. What's the new value of I? 2, right? 2 less than equal to 10. True or false? What will happen? Add 1 to a. Add 1 to a, multiply what? Multiply I. Multiply 2 with I. What's the new value? 2 into 2. Understood what's happening? Whatever is the current value, multiply to that 2. Whatever is the current value of A, add to that 1. Getting it? Getting it? Next, it will go back again to the while loop. Go back to again to the while loop. What will be new value of I? 4. 4 is less than equal to 10.
True, right? Add 1 with a. New value is 3. Whatever is the current value of I, multiply that with 2. Next, check, is 8 less than equal to 10? True again, correct? What will happen? Add 1 to a. New value is 4. Whatever is the current value of I, multiply 2 with that. New value of I is 16. Now, is 16 less than equal to 10? False, right? So what will happen? This loop breaks. The entire loop will go back to the I again. Value of I now, sorry. Now value of j will be increased by 1. Till here, is it understandable what's happening inside this? Till here, is it understood what's happening for the first iteration of jth loop? What is happening inside while loop? Understandable? What will happen when while loop terminated? This is going back to the for loop again. While loop terminated, it will go back to the for loop again. Again, I will be initiated to 1. I will be initiated to 1. Again, while loop will be running. So now tell me how many times the while loop will be running? How many times? How many times the while loop runs? 10 times, right? For j equal to 0 till j equal to 9. 10 times my while loop is running. Now, how many operation I have done inside my while loop? Can I say log n? Log n operation I have done inside while loop. How many times? N times. So how many operations in total? N log n. What's the time complexity? Big O of n log n. True or false? How many of you can understand what I did? Yes, tell me, Abhishek. सर जैसे ये while loop जो है ये ब्रेक हो रहा है, ये तो मुझे समझ आ गया। जब ये ब्रेक हुआ तो दोबारा से j में ये वैल्यू कैसे ऐड हो गई सर? ये प्लीज बताएंगे मेरे को। j में वैल्यू ऐड नहीं हो रही। j देखो, j इन रेंज, ये जो jth लूप है ना, n टाइम्स चलेंगी। j लूप n टाइम्स चलेगी। जो j का इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू विथ विच इट विल स्टार्ट इज 0। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ j विल बी 1 टिल n। j 0 to n-1 तक jth लूप विल बी रनिंग। तो j की वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट होगी ना। तो सर यहाँ पे 40 पे क्यों रुक रहा है फिर? क्या ये जो अपना 10 के बाद जो वैल्यू आई है इसको कैलकुलेट करके ये 40 आई है ना सर? हाँ 40। तो इस पे से 40 पे क्यों रुक रहा है फिर ये? 40 पे क्या? I mean, सी इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? while loop, हर while loop में 4 एक ही वैल्यू 4 के 4 सॉरी हर while loop में a में 4 ऐड हो रहा है। तो ये jth लूप जो है 10 टाइम्स चल रहा है। तो 10 टाइम्स अगर ये jth लूप चले, मतलब ये while लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा सर, ठीक है। तो क्या 4 into 10 वैल्यू हो जा रहा है। दैट्स ऑल। ओके सर। टेल मी व्हाट एल्स द डाउट इज। और क्या डाउट है ऑल ऑफ यू? Just have some clear observation. How many times the jth loop will be running? Jth loop will, sorry, yeah. How many times the jth loop will be running? N times, correct? From 0 to n-1. Now, how many times the while loop will be running? Log n, correct or wrong? For j equal to 0, while loop will be running log n times. J equal to 1, again it will run log n times. Till j equal to n-1, the while loop will be running log n times. So how many times the while loop is running?
n times, right? And each time I am running the while loop, I am doing exactly log n operations. True or false? So how many total number of operations in total? N log n. N into log n. Is it clear now? For each while loop, I am doing log n operations. And how many times I am running the while loop? How many times? N times. Total number of operations, n into log n. What's the new time complexity? N log n. बिल्कुल देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? आज भी दिया है, आगे और भी देंगे. All clear? Tell me how the loop is running, how the while loop is working, what's the number of operations related, and how many times the while loop will be executed. These three things has to be kept in the mind. What's the total time complexity? N log n. All clear here? Please tell me. All clear? हेलो सर. बोलो. सर जब हम सर जो सर n का वैल्यू इनपुट में हम सर 10 जो इनपुट करते हैं लेते हैं तो उसके बाद एंटर दबाते हैं तो 40 होता है सर. इसमें सर ये कैसे हो रहा है सर? ये जो while loop है, while loop में a का वैल्यू, a में जो वैल्यू है ना इनिशियली 0 है. एक बार while loop अगर चले, एक बार एक तो का वैल्यू तो हमने पहले मतलब दे दिया है, दे दिया है, पर यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना, while loop के अंदर अपडेट कर रहे हैं a का वैल्यू. एक का वैल्यू अपडेट हो रहा है मतलब a में जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो. a इक्वल टू a प्लस 1. जब भी while loop चलेगा तब क्या होगा? a में 1 ऐड होते जाएगा. सपोज सर हमने तो यहाँ पे 10 लिया वैल्यू सर, इनपुट वैल्यू 10 लिया. उसके बाद सर तो देखो while loop कितनी बार चल रहा है, while loop चल कितनी बार रहा है. n अगर 10 है तो while loop 4 बार चलेगा. कैसे सर? देखो स्टार्टिंग में क्या है, i की वैल्यू 1 है, ठीक. 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, इसके लिए चलेगा एक बार. फिर इस क्या कर रहा हूं, i को मैं बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. क्या करो, वट एवर करंट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करते रहो जब तक कि i लेस देन इक्वल टू n है. अच्छा okay. तो वो सर तो 4 बार चलेगा, इसलिए 10 into 4 equal to 40. Yes, exactly. 10 into 4 equal to 40. ठीक है सर. ठीक है. और सर एक मिनट सर. बोलो. सर यहाँ पे जो n इनपुट लिया है ना सर, ये कोई एक फिक्स नंबर ले सकते हैं क्या सर इनपुट के बिना? नहीं, अगर n तो वेरिएबल है, जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी का मैटर रहता है उसमें तुम्हें हमेशा n के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, वेरिएबल के टर्म में, ठीक है. n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है. जब नॉर्मल प्रोग्रामिंग करेंगे n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अगर n का वैल्यू हम इंटीजर में एक कोई भी एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं, सपोज 5 या 10, यस, तो भी मतलब सपोज 10 दे दिया तो भी n जब n का इनपुट बाहर से आ रहा है तो हमेशा n के टर्म्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है. कभी भी फिक्स्ड पकड़ के नहीं चलते, क्योंकि इनपुट रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है. हाँ कुछ नहीं, मैं सर एक एग्जांपल के लिए बोला है सर. हाँ ठीक है सर. बोलो. As you told us, 4 into 10 is equal to 40 you was told. Yeah. Yes. As when I was taking the 5 as a input, 5 into 4 is equal to 20 is the output. It will become. N is the input you are why it will be. Then here it will be changing, na? Here it will be changing. I don't think 5 into 4 will be there. Some other output will be coming. If you take n to be 5, okay? Okay. Got it. Okay, this topic I have explained you how the log and time complexity is coming.
Let's keep it here till here. Now let's start with arrays. Today we will be taking the topic arrays. See here one thing. All of you know what is a list? What is a list? Can anybody explain? What is a list? Can anybody explain? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी डाटा देते हैं वही लिस्ट होता है सर। यस, बिल्कुल वही लिस्ट होता है। Okay, yeah. What is a list? Can anybody tell me? Sir, organized way of keeping the data. Yeah, sorry. Organized way of keeping the data. Yes, true. Because list is a data structure. But yeah, what kind of data do we keep in it? Sir, managing the variables in it. Kind of. But yeah, what kind of data we keep inside list? What kind of data we can keep? Can anybody tell me? Sir, we can Every do kind. anything like floating, integer, string. So we can take string, bool, integer, and the float. Okay, fine. Every data together is possible to be kept inside list, correct or not? Yes. Yes. All of you agree with me here that yeah, inside Yes. list, any kind of data I can keep together. And okay, what about indices? Sir, in list indices start from 1 or sorry 0 only, no? Yeah, 0. What I said, these are memory slots inside list that I have, right? And here any data I can keep, and the memory slots are numbered from 0 to n-1, where n is the size of my list. No, sir. Yeah, tell me. So ये indices मतलब sir? Index. Okay, sir. Got Okay. it. Okay, got it, sir. Okay, mutable data you can keep. Okay, mutable. We can access the data by index, right? Suppose the name of this list is L. L of 0. If I access, this will give me the first data of the list. True or false? True or false? True, sir. True, sir. L of n-1. If I give, if n is the size of my array, this will give the last element. Okay. But one thing in list, I can have floating point integer, that means float data, integer data, string data, anything I can keep together. Now, what are arrays? Fact is, what are arrays? Arrays are lists with homogeneous data. Arrays are lists with homogeneous data. What do I mean by homogeneous data? Similar kind of data. If this is an array, and the first element is 1, this is an integer. I cannot keep any float, string, character, or a list or a dictionary inside my array. All the data has to be integer only. When all the data are of same type, such kind of arrangement we called homogeneous data. So can you repeat the last line of such like? Array of same data, list of same data type. This is an integer, this is an integer, this is an integer. Every element inside my list, if inside my list, if every element is an integer, then I can say that this is an array of integers. So like we can only keep Whenever one data type in the I list, want to then make only an it will. array. Exactly, then it will be an array. Whenever you want to make an array, every data inside the array should have same type.
what? Same type. If any of the element is float, has data type float, all elements should be float, then only this is an array. Getting it? Inside list, we can store elements of all data types, but inside array, we can have just a single data type. Okay, done. Is this understandable to everyone? Okay, sir. तो sir list और array का यही difference है क्या sir? Yes, list का और arrays का एक ही difference है. मतलब यही मतलब single data type होना है. Single data type होगा. ठीक है sir. Any doubt here till here? Any doubt till here? No, sir. All of you? Clear, sir. Clear. Clear, sir. Clear, sir. Okay. I'm not going into a point. Yeah. If I come in point of view of C, C++ languages like this, okay? If you use these languages, one concept will be coming is arrays cannot be resized. Arrays are of fixed size. Fixed number of elements can be inside it. You cannot just keep on adding data inside it always. Arrays are of what? Fixed size. Okay, there are huge number of memory slots, but those are limited. Okay, every data should be of same type, as well as the entire size of the array is fixed. You cannot, once declared, you cannot change it. This is the concept of arrays actually. Okay, no matter whether the array is static or dynamic. Okay, the array size cannot be changed. Can you remember this point? Size of array cannot be changed. सर ये समझ में नहीं आया सर. बोलते हैं, रुको. मुझे ओके, इस पॉइंट को अभी छोड़ दो. ठीक है, ये बाद में देखेंगे. Okay, done. Now, size once declared. Array, whenever you declare an array, whenever you make an array, its size has to be declared. You have to give the size. What is the maximum size this array can have? Once you are declaring that, after that you cannot change it. After the declaration, you cannot change it. Okay, there can be empty spaces inside array where elements Sir, can't we append or like we can do anything pop? That means when you are appending, what's happening is that there is already your interpreter has given you some memory. Okay, inside that memory, whatever you want. Declaration से पहले तो कर सकते हैं ना, जितनी Declaration बड़ी से पहले size size fixed कर सकते हैं. Size fixed कर सकते हैं कि हाँ मेरा array कितने size का होगा. Once declared, वो कभी नहीं declare, वो दोबारा change नहीं हो सकता. Okay. Okay. By size you mean So, कि number sir, of elements in it or the size one element takes? Size means the total number of elements it can have inside it. Okay, okay. No, arrays are not immutable. Okay, Sir, so means an arrays means we cannot add or insert anything like, but we can pop or remove. You can, no problem. You can add elements, okay? But fact is, for that you will be given firstly a fixed space. Fixed space will be there. You may add it, remove it, whatever you want, but you have to do that inside fixed space only. So it can be an empty array. Yeah, it can be an empty array. No problem. So can you show that in code? Point is the proper How much that space it is? how much this is not fixed. There are two kind of allotment. Space allotment can be there. First is you can declare that while before running the program, I can declare that is one kind of allotment. After running the program, while running, I can have
while running the program I can have an memory allotment, that is runtime allotment. Okay, point is आपका that's why कहने का मतलब ये है कि अगर As an 6 एलिमेंट की एरे है हाँ तो हम उन 6 एलिमेंट के अंदर रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन साथ नहीं कर सकते उनको. yes, तब साथ नहीं So कर sir, सकते. how can we put an empty array? We have to decide the length of the array, na sir. Length of the, that means among the fixed space you have not given any element inside that. Means This is in the space the length can be n, na? Yeah, that can be Empty. yeah, the length of the array is n but no elements are inside it, so the size of the array is going to be 0, but the max, Okay. there is a fixed maximum size of it. So after in further we can add it, then it will be the array. Yeah, as of now leave this point because you won't get any proper implementation of it inside Python. Yeah, arrays are mutable, you can delete data, add data, do anything with it. हेलो No problem. Yeah, tell me, Kanu. सर मैं क्या बोल रहा था, अगर एक एरे हमने डिसाइड कर दी. तुम्हारा बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. हेलो हेलो बोलो. हाँ सर, मैं बोल रहा था कि एक एरे हमने डिसाइड कर दी है, एक फिक्स नंबर, ठीक है, और हमने उसमें ना कुछ कम ही डाटा लिए. मतलब हम अगर 10 साइज एक एरे डिक्लेयर कर दिए और उसमें हम 4 ही डेटा रखे, तो उसका है. अगर लेंथ हम निकालेंगे वो 10 दिखाएगा कि 4 दिखाएगा? 4 दिखाएगा. लेकिन हम तो लेंथ डिसाइड कर दिए 10 है करके. ठीक है, 10 का वो तुमने क्या किया, ठीक है, वो मैं पर्टिकुलरली यहाँ तो खैर चलो पाइथन में ऐसा कुछ है नहीं कि इनिशियली तुम डिक्लेयर कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, क्या 10 का मैटर है, 10 मींस तुम मैक्सिमम साइज दिखा रहे हो. ऑब्वियसली अगर दूसरे लैंग्वेजेस यूज करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यही दिखाएगा, 10 ही दिखाएगा. फैक्ट है यही सेट होता है, इसलिए आपको सर उसका साइज हम लोग कैसे सेट करते हैं? मतलब साइट वो एक्चुअली पाइथन में ये कर नहीं सकते ऐसा कुछ, कोई साइज सेट करना और फिर उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ रहा है, ये नहीं कर सकते. ऑटोमेटिक हमको जो इनपुट जितना दे देंगे वही रहेगा. इसीलिए पाइथन में क्या है, डायनामिक डेटा टाइप, डायनामिक लिस्ट दे दिया है हमें कि व्हाटएवर कोई भी डेटा ऐड वगैरह करना हो इसी में कर लो. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब यहाँ पे तुम फिक्स्ड कोई साइज पर्टिकुलरली डिटरमाइन कर पाओगे. फाइन, ओके ग्रेट. सो या लेट्स स्टार्ट. क्या हुआ, let's start with having some introduction to arrays. Arrays are not mutable. Oh sorry, arrays are mutable, correct? You can delete, add data, update data, do anything with it you want. So you said we cannot add the beyond a fixed size, you cannot. So once I show that now how the size will be fixed and how it will not be fixed. In Python, I cannot do that. First, listen, that's why I mentioned that in C, C++, these features are there. Okay. So from there, the definition of arrays has actually arrived, that what is an array? And once you declare an array, their size cannot be fixed. Size. So how we will work on Python on arrays? Right now, we will use list only. No need to worry. Okay. Okay. Okay, so one definition, yeah, tell me Abhishek. सर मतलब ये कि जो हमने साइज फिक्स कर दिया और उसमें अगर हम कोई भी कंपोनेंट डालते हैं तो उसे हम मतलब चेंज कर सकते हैं, बट हम साइज को चेंज नहीं कर सकते. यस, साइज को नहीं चेंज कर सकते, पर ये जो फीचर है इफेक्टिवली पाइथन में नहीं मिलेगा. ठीक है, ये दूसरे C, C++ लैंग्वेजेस में जाओगे तो कहीं भी अगर पाइथन का एरेज का डेफिनेशन पूछे तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट साइज ऑफ द एरे कैनॉट, साइज ऑफ द एरे इज ऑलवेज फिक्स्ड. ये डेफिनेशन कभी भी एरेज का पूछा जाए ना, सेम डेटा टाइप भी होता है, साइज ऑलवेज फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता. सर जब फिक्स होता है तो फिर हम उसमें ऐड वो चेंज कैसे कर सकते हैं? वही जो मेमोरी स्लॉट्स अलॉटेड है उसी में. ओके, समझे? रिप्लेस कर सकते हैं मतलब हम कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ फिक्स्ड मेमोरी स्लॉट्स में ही करना पड़ेगा. कानू, टू मच नॉइस फ्रॉम योर एंड. Okay, yeah. So yeah, let's see how we will declare an array in our program. So what I said, for Python, we will be using list only to make an array. So how our array looks like? Let's L be equal to 1, 2, 3. Is it an array? Can you tell me? Yes, sir. 1, 2, 3. Is it an array? Why?
All the numbers is are integer. integers. All Same the data numbers are type. integers, right? Same data type. 1.1, 2, 3. Is it an array? No, No, it is one using loop and It is a list. Okay, fine. this is a mixed data type, so it will be a list, not an Yeah. integer. Fine. So, okay, done. Next. Is this an array? This is also a list. Okay, great. That's a list. Fine. Okay, fine. So I want to make an array of, from the console, I want to take input for an array. How will I do that? Okay, let's see. Let me try. Okay, input. Let me given that and let me try printing this cell. Sir, we cannot give the Sir, input of input array का directly. type declare करना होगा. Yeah. Can't we Input give का the type input declare of करना array होगा. directly like an input? Yes, giving I'm square bracket? showing that. Just wait. Okay, so I will take first. I will take input for the list. For making a list L, I will take input from console. So can I do something like this? itest.py. Let me give 1, 2, 3. So 1, 2, 3 entirely is coming, but let me also print the type. Okay, 1, 2, 3. Sir, this 1, 2, 3 is the string now. Yeah, this is coming to be a string, right? Not a list. 1, 2, 3 is getting printed, no problem. But this is a string, not a list. How can I make a list? Integers are input, then inside the Yeah, square okay, bracket. Integer लगा. Okay, fine. Let me first try. Let me first show you how to take the input for a list from console. Okay, for that there is a method called split. Split inside brackets give a space. Okay. Now clear it. 1, 2, 3. Okay, class is a list now. Getting it? Data type is what? List. How I have done that? I am taking input from the console and see, I have done what? How I have given the input? 1, 2, 3. Between each input, there is a space. What will I write? Split. Write this input method after the dot split and then a space. Sir, but the data type inside the list is still now it is string only, na sir? Yeah, it is a string. Each and every data is a string. Okay, using the split method and giving this space. Why space? I have given space in between any two inputs in my console. That's why I will mention space with the split function, and this will do what? Make strings 1, 2, 3. 3 strings it will make and put each and every one of them inside a list, and the list will be stored inside L. Getting it? What we will do to take input for a list from console, use the split function. Done. And just give a space here, because most of the inputs that we give from the console are separated by a space. Now I want, this is what, see, what's the output I am getting? Strings. सर List of strings. सर अगर हम स्पेस ना दे तो क्या होगा? काम नहीं करेगा. देख लो क्या आता है. Input dot split. 1, 2, 3. ओ तो भी ले रहा है. अच्छा ठीक है, ना भी दो तो चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है. सर क्योंकि सर वो L ने इनपुट में ऑलरेडी वो स्ट्रिंग लिया है शायद से, वो डायरेक्टली इसीलिए ले रहा होगा. या चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. Sir, I want to ask one thing. If you will take the input of an integer, then what we will write at the in that split? Yeah, same. I will show you. So yeah, what's happening? Why I've shown you the space? Because there may be some other kind of inputs as well that you want to store as a list sometime. Okay, we will take that later on. Yeah, tell me, Memon. So yeah, what we will write? Give input for a list. I want to take this input from console. Okay, input for a list I want to take from console. What will I write?
the input method, and along with that split. This will do what? For each and every of the number, this will make a string and put that inside a list. Put that inside a list, and L will be pointed to this list for storing it. What will happen? Whatever input 1, 2, 3, this is my input, right? This is a content of split. This is the content of a list. If I don't split each and every of the content, what will happen? This entire thing will be stored as a string. So what, Sir, by what split, it will make the input as a list. That means only the split function. Yeah. By split, what will happen? It will check for spaces. And whenever a space arises, this particular input will be going inside the list. Again, after a space, this 2 will be going inside the list. After a space, 3 will be going inside the list. Something like that will be happening. Just remember that with this split function, what happens? Whatever input I give, 1, 2, 3, 4, this entire thing is converted to a list of strings. How do we make list from console input? Using the split function. Okay, is it clear? Hello sir. सर अगर हम लोगों ने इनपुट में अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लिया होता पैरेंथेसिस के अंदर, तो स्प्लिट की जरूरत नहीं पड़ी होती ना सर? ऐसा क्या? लगता तो नहीं ऐसा कुछ होगा, देखना तो. Not this inputs or inside the parenthesis, I am saying. No, that's invalid syntax, right? Will it work? Let's try. Okay, let's try this. What's happening? No. Again, same thing is happening, right? This will be printed. This string will be printed. This I am giving that. This will be counted as a string. Okay. Yeah. Bolo, Memon. Hello. Yeah. Hello sir. बोलो क्या हुआ? Maman, proceed, bro. Then after I will. Hello sir. Yeah, बोलो. Tell me. सर स्प्लिट फंक्शन से हम डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में. स्प्लिट फंक्शन से बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ 1, 2, 3 सब कुछ ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके उसका लिस्ट बना दिया जाएगा. तो सर स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम कोई भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज इट? एक बार देख लेते हैं. चलो, कर सकते हो. Okay, pipe, but yeah, 1.1 then 1.23 आ रहा है. कोई भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया. क्लास इज अ लिस्ट, एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग. आपने तो स्ट्रिंग में सर यहाँ पर तो लेकिन हम लोगों ने इंटीजर दिए ना, तो वो यहाँ पे उसमें स्ट्रिंग में क्यों आ रहा है? स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन काम ही ऐसे करता है. जो भी डेटा तुम दोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो उसका लिस्ट बना देगा. Whatever नहीं data नहीं you सर will give. क्लास जो लिस्ट शो कर रहा है, नहीं सर डेटा टाइप जो अपना जो लिस्ट शो कर रहा है वो स्ट्रिंग शो करना चाहिए ना, जब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है तो. लिस्ट ईच एंड जो कंटेंट है ना, कंटेंट का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ना कि लिस्ट का डेटा टाइप स्ट्रिंग है. List is a different data type. List is itself a data type. हाँ राइट सर, बट आपने यहाँ पे कहीं लिस्ट बनाई नहीं है ना, तो वो बनी कैसे, वो पूछ रहा हूँ मैं. क्या बोला मैंने? फिर सर अगर हम लोग स्प्लिट करके उसको लिस्ट बनाएंगे वो इंटीजर कर देगा, तो अगर हम वो लोग इंटीजर इनपुट लेंगे तो वो भी तो स्ट्रिंग हो जाएगा. सब कुछ स्ट्रिंग हो जाएगा अगर मैं स्प्लिट फंक्शन सिर्फ यूज करता हूँ तो सर फिर इंटीजर इनपुट का लिस्ट कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे? मैं बोला तो, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, जरा रुक जाओ. सबको स्ट्रिंग लिस्ट बनाना आ जाए कंसोल से, फिर मैं आ रहा हूँ वहां पे. सबका क्या हो रहा है? मैंने ये इनपुट दिया, each and every single data will be converted to string and that will be put inside a list. This is what is happening with the split function. Okay. सर वो स्प्लिट जो लिखे है ना उसके अंदर डबल कोट्स लेके
हाँ कुछ हम अगर लेटर या नंबर कुछ लिखेंगे तो वो एज ए सेपरेटर काम करेगा, ये कर error देगा आएगा? करेगा, पर एक बार देखना इनपुट लेके सेपरेटेड, तब शायद देना जरूरी पड़ जाए इनपुट में। नहीं सर, सपोज हम जो 1 2 3 अगर लिस्ट ले रहे हैं, हमको उसके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करवाना है एज ए सेपरेटर, तो ये स्प्लिट के अंदर वो लिखने से आ जाएगा क्या? नहीं, वो तो फिर दूसरा कोई भी इनपुट दे रहा हूँ उसके बीच तुम कहना चाहते हो कि कुछ जॉइन फंक्शन के टाइप तुम काम करना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, वो exactly. दूसरा फंक्शन है। इसमें एक बार डबल कोट्स लगा के कोई कुछ दिखाई ना सर, हो रहा है कि नहीं? अभी नहीं, रुको, पहले स्प्लिट का पता लग जाए सबको। ओके फाइन, ये ऑल इज क्लियर हाउ द स्प्लिट इज वर्किंग। Split will do what? Whatever input I am taking, 1.1, 1 and 1.23, all will be converted to strings. And then a list of these data will be made. This is what my split does. Okay. Sir, Yeah, tell me. how we can get to know this is a array? So by default, every data is a string. By default, when I use split, every data inside it is a string or not. By default, every data is a string or not. Then it is an array. By default, every data inside my list using the split function has same data type called string, right? Every data, this one is of type string, 1.1 string, 1.23 string. Isn't it an array? Array. It is an array. Okay. Is it an array or not? Tell me, everyone. By default. No, sir. Why? It's not an array. Why? So, Why? so because it is containing. Okay, sir. Yes, it is strings. The overall string. Every data type using the split function is converting to a string and then getting stored inside a list. Isn't it an array? Sir, So that means the data type of a string array is a data type of a list is string. No. Yes, sir. Array, sir. Data inside my list has type string. This is the meaning. Only the type string. Yeah. Using the split function. Okay. Now I want to convert this particular input into integers. How will I do that? Sir, the data where it will be showing saving inside L. Yeah. Can you print the once again L type of? Yeah. See. No. It is in the list, but we need in the array. It was. You cannot get inbuilt array inside Python. I have to use list to implement arrays. Correct. Okay. Fine. Okay. 1.1. Let's say 1.234. Now see, everything is being first converted to a string, put inside a list, and the class is coming out to be list. That's all. Now I want to make an array of integers, nothing else, only integers. How will I do that? For that, the syntax is I will use. Okay, let's try. One suggestion has been there. Let's try this. Whether this happens or not. Okay, 1 2 3. Is it happening? No, right? I want to make array of integers. 1 2 3 should be kept as an integer inside my list. Correct or wrong? So what will I do? We'll use some method called map. Okay, map, then map each and every string that we are getting to an int. Okay, is it coming here? Okay, yeah. Now typecast the entire data to list. Okay, now let's try running this. Okay, all are integers inside my array. No strings are there. Achieved my array of integers.
What Sir, I did? here we How we have Sir? done this? Yeah, tell me. spirit we can remove now instead What of remove? writing of spirit SP. This we will remove. Uh, Then what will you do? Directly we can give the int bracket open and close int and input we can give it. Okay, Like that. do one thing. Try that once on your VS Code and then report whether it's happening or not. Okay, sir. Okay. Like split जो function है वो use होता है इसे जो भी इनपुट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में. तो सर यहाँ पे अगर हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करें तो फिर स्प्लिट क्यों यूज हो रहा है? Sir, here First, why we see. using map? Wait. That's why I'm saying how is it working? Listen first. What's happening? 1, 2, 3. This is the input I am getting. Initially, if I take only input, using this method, this entire thing will be converted to a string. Now, if I write input dot split, what it does, converts each and every of 1, 2, 3 to a string 1, string 2 and string 3. Now map int means whatever strings we have got now, convert them to respective integers. Now put them inside a list by typecasting it. That's all, nothing else. Okay, sir, so can't we put this string directly to the integer? No, this is a list of inputs that I am getting. Okay, so if you don't map this, no integer conversion will be happening. So this is how we will make array of integers. That means, sir, for making the array of integers, first we have to convert this into split and after that into integers, right, sir? Yeah. Done. All of you understood how will we make array of integers? Sir, if the split function determines the data inside the list is string, so here how can be like an integer? Because I have mapped it. Each and every of the string I converted using the map function into a integer. Then after the map we have given that split. Okay, no, not after the map. This will work Inside first. the map. Okay. This will work, but then mapping will be done. Okay. Okay. Clear, everyone? Hello, sir. बोलो. सर ये मैप सर दोबारा बोलेंगे सर. मैप क्या, मैंने स्प्लिट क्या करता है, हर एक इनपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. हाँ. उस स्ट्रिंग से मैप क्या करता है, मैप फंक्शन स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करता है. int लिखा ना, मैप int. हाँ. मैप int मींस व्हाटएवर जो भी स्ट्रिंग है उसको रेस्पेक्टिव इंटीजर में कन्वर्ट कर दो. Sir, can we print the data type of 1 or 2 anywhere? Yes. Why not? सर तो सर पहले हमने int में कन्वर्ट करने के लिए int दिया था, लेकिन यहाँ पे तो सर मैप देना पड़ेगा. क्योंकि मैप क्यों देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट ऑफ डेटा है. सारे लिस्ट के डेटा को मैं int में कन्वर्ट कर दूंगा, एक डेटा नहीं, लिस्ट ऑफ डेटा को. ठीक है. ओके, लेट्स ट्राई प्रिंटिंग. ओके, आ रहा है int, आ रहा है L of 0 क्या आ रहा है, int. Yes. All done. All of you can now make arrays from console, make list from console or not? How many of you cannot? Sure. Yeah, what to repeat? Tell me. कौन है AUF4? Conversion means initially what I was doing using the split function. 1, 2, 3 entire thing I have using the split function. I am converting that to list of strings, right? List of strings. Each and every of this string I want to convert to integer. What will I do? I will use map function, map int, and then whatever the input split I have done here, whatever string I am getting after this, all of them will be converted to respective integers.
after they are converted to strings. Now entire thing, entire data, I will convert to list. That's all. Typecasted to list. Okay. All done. All of you can do now. Convert, make arrays. Yes, sir. All of you. Yes, sir. Literally. Yes, sir. Fine. Okay. Shall I stop here? Shall I take a problem? What shall I do right now? हाँ, float वगैरह, string वगैरह कुछ भी कर सकते हो मैप यूज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं. Show some examples. Tomorrow can continue. Tomorrow I won't Tomorrow be we will available. take Okay? another topic, sir. सपोज सर, हेलो सर, Yeah. Why, sir? सपोज Where are you हम going tomorrow? सर फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो INT की जगह सर मैप Float लिख देंगे. हाँ फ्लोट Float लिख देंगे. FLT लिखने से हो जाएगा सर फ्लोट. हाँ हो जाएगा. तब से यहाँ पे फ्लोट डेटा जो डेटा कंसोल से दोगे वो फ्लोट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रहे. ठीक है. वेरी गुड. सर कल आप रहोगे नहीं यहाँ पे क्लास में? No, I won't be there tomorrow because an urgent work is there. I have to go somewhere. Okay, arrays का definition मालूम पड़ गया, बनाएंगे कैसे मालूम पड़ गया. All of you comfortable? सर इस पे एक एग्जांपल दिखा दो ना सर थोड़ा सा, कोई भी नॉर्मल सिंपल वाला स्टार्टिंग. जैसे और क्या लिखना है. Okay, let's make an array of float. Array of floating integers. What will you do? Let's write 1.1, 1.2, 1.2, okay, 1.3, 1.45. What's happening? Okay, yeah, map input. Sorry, it's not saved. 1.12, 1.13. Okay, everything is coming fine. 1.12, 1.13 I've taken as my respective floating integers or real numbers. Now 1.12 list of floating numbers will be made, and each and every data type that I have inside my list is float. Okay, any problem? This is how we make arrays. Specifically, we make arrays like this. So we need to define for the float and integer, but for the string we don't need to define. No, you don't need to string. define. Yeah. Yes, tell me. सर मैं यहाँ पे इनपुट में सर इंटीजर दे दूँ तो? नहीं तो देखो क्या होता है, इनपुट में अगर इंटीजर दिया तो ये लेगा ही सर, नहीं. पर फ्लोट ही रखते हैं और नीचे इनपुट दे रहे हैं तो. अच्छा, वो शायद टाइपकास्ट हो जाए. ठीक है, वो 0.0 लगा के टाइपकास्ट हो जाएगा इंटरनली, बट या चलो देखते हैं. 1 2 3 हो गया. 1.0, 2.0, 3.0 ये इंटरनल टाइपकास्टिंग पॉसिबल है. इंटीजर दे के फ्लोट में कन्वर्ट करना, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है, फ्लोट दे के इंटीजर में कन्वर्ट करना. ठीक है. Okay, all done. Let's take the MCQs today. We'll continue. All the best for your exams. Whoever are appearing on Saturday will continue on the doubt class. Okay, all of you, please come on this doubt class. My request is there. We'll take some advanced topics also in this from this doubt class. So then tomorrow there will not be a class? No, tomorrow there won't be a class. Sir, my internet was interrupted. When we have to join the TS session? TS session, I am not actually. Why don't for regarding the TS session or not, please inform me. I mean, ask me. Everything is notified in the notifications daily. No, sir. Hello. सर वो नोटिफिकेशंस में आता है पूरा TS सेशन कब होगा, क्लास कब होगी. Dude, I'm not asking session now, sir. Now tell us, sir, that we things about I asked about that. Yeah, again repeat. What's the problem? Hello. Sir, आपने अभी कहा ना कि आप एडवांस कुछ एक्सप्लेन करोगे. हाँ. कौन से लेक्चर में अटेंड करेंगे, मैं वो पूछ. डाउट क्लास में, इस डाउट क्लास में. सैटरडे को जो डाउट क्लास होगी उसमें. Saturday 9 PM to 11. All of you please come to the doubt class with your doubts.
first all of your doubts will be taken, then I will explain something. Okay, सर some कल advanced कुछ topics. सर कल कुछ है क्या? कल कुछ नहीं, कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है? अच्छा, काम टेस्ट है वगैरह कुछ नहीं है ना? ना ना, वैसा कुछ नहीं है. ओके. Okay, let's start with the MCQs. Fine. Given the first MCQ, same time, whatever time we have for our class, the same time is for doubt class.
सर Yes, tell me. से एमसीक्यूज आपने दे दिए? सारे दे दिए। सर मेरे तो कोई नहीं कर। रिफ्रेश किया? यस सर। रिफ्रेश किया? बहुतों ने तो एमसीक्यू किया। सर टाइम आउट ही हो गया ना सर। सब तो टाइम खत्म हो गया। यस सर रिफ्रेश हो गया। अटेंडेंस सर दे रहा हूँ अभी। Okay, attendance created. All of you, please mark. Whoever has doubt can stay back after marking attendance. सर अटेंडेंस क्रिएट होगी? हो गई। So we can leave now, sir. Yes. Hello. Whoever has doubt can stay back. Any doubt you are having? सर जो फास्ट में जो सर अपने पहले जो व्हाइल लूप्स के बारे में बोला था सर, उसके बारे में सर थोड़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके सर। See here. क्या बोला था? a equal to 0 ऐसा कुछ ना, I equal to 1 and yes sir, and afterwards n equal to input ऐसा कुछ दिया था ना मैंने, int input। देखो इधर पहले सही से देखो, फिर बाद में इसको कोड तो बाद में वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। while क्या बोला? while I is less than equal to n, ये कंडीशन है, ठीक है। क्या है? जब तक i डाउन n के मतलब छोटा होगा, n से छोटा या बराबर है, बराबर भी हो या छोटा हो, कुछ भी चलेगा। हाँ, इक्वल टू, हाँ, a इक्वल टू a प्लस 1, a में क्या करो 1 ऐड करते जाओ,
a इक्वल टू a प्लस 1 का मतलब है a में 1 ऐड करते जाओ, समझ आ रहा है? हाँ एंड i में क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करते जाओ। हाँ सर। ठीक है, तो देखो क्या हो ए रहा है। में सर सपोज हम इनपुट सर 5 लिया। चलो ड्राई रन करते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 10 लेते हैं, ठीक है। हाँ इनपुट, हाँ सर। तो क्या पहला देखो i का वैल्यू 1 है, यस है ना? ये लूप रन करेगा, i लेस देन इक्वल टू n रन करेगा। हाँ सर। तो क्या होगा, i में a में 1 ऐड कर दो, a में 1 ऐड कर दो, a का वैल्यू 1 हो गया, 0 था, 1 ऐड करेंगे 1 हो गया। क्या करो, i में क्या करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1 था तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हो गया, समझ आ रहा है? फिर क्या होगा, वापस ये घूम के कंडीशन चेक करने जाएगा, i लेस देन इक्वल टू n है या नहीं है। 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, i का वैल्यू अब 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ 2 लेस है? देन इक्वल टू 10। हाँ फिर क्या करो, वापस इस लाइन पे आओ, a इक्वल टू a प्लस 1, a में 1 ऐड कर दो, सॉरी a में 1 ऐड करो, तो मतलब 1 था, a का वैल्यू 1 था, तो 1 ऐड करने के फिर बाद क्या से- आएगा, फिर से सर 1 आएगा सर। क्यों आएगा, 1 प्लस एक 1 आएगा ना, 2 one- आएगा। 1 तो था ही, उसमें 1 ऐड हो गया तो 2 आ रहा है। और सेकेंड टाइम तो 2 आएगा। हाँ मतलब ए का वैल्यू पहले तो 1 हो गया था, उसके बाद हाँ। सेकेंड टाइम 2 आएगा, 1 हाँ, प्लस 1 1 में 1 ऐड हो गया, और क्या हो रहा है, यही ना। नेक्स्ट हाँ। क्या हो रहा है, i का वैल्यू 2 है, ये लाइन अब आएगा, ये लाइन पे i का वैल्यू 2 है, हाँ 2 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 2 4। 4। वापस, अच्छा वापस जाओ, वापस वाइल लूप में आओ, i लेस देन इक्वल टू n, 4 लेस देन इक्वल टू 10, करेक्ट है, ट्रू है, हाँ हाँ। ठीक है। फिर वापस यहाँ पे a इक्वल टू सर a मतलब प्लस वो 1, सर मतलब ए में सर ऐड मतलब ऐड होगा, और हाँ और जो आई में है सर ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा। a में क्या a में अब a का वैल्यू तो 2 था, हाँ ठीक है, 2 में 1 ऐड हो गया, 3 हो गया ये, 3 इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया। वापस जाओ, बताओ अब 8 लेस देन इक्वल टू n 10 है, i लेस देन इक्वल टू n, इज 8 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है ना, सही ट्रू है। है सर, ट्रू है। वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल टू a प्लस 1, दिस विल बी 4, 8 के बदले ये 16 हो गया। हाँ। ना वापस जाओ, फिर से चेक, अब बताओ 16 लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। तो लूप खत्म हो गया, हाँ, ठीक है। अब देखो इधर देखो, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। पहले i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 8, इन 4 वैल्यूज के लिए लूप रन कर रहा है ना, हाँ सर। सही है, इन चारों वैल्यूज के लिए ही लूप रन कर रहा है, 1 2 4 एंड 8, 16 पे लूप खत्म हो जा रहा है, वो ठीक। फॉल्स तो हुआ तो खत्म हो गया। हाँ सर। क्या हुआ, मतलब उनसे आई लेस देन इक्वल टू 10 ये तो फॉल्स है, इसलिए वहाँ पे खत्म हो गया लूप्स। हाँ वहां पे लूप खत्म हो जा रहा है। खत्म तो हो देखो गया। और 2 टू दी पावर 0 लूप रन कर रहा है यहाँ पे, हाँ सर। ये इसका वैल्यू 1 है ना, तो 1 पे तो लूप चलेगा। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 1, यहाँ पे भी लूप रन कर रहा है, सही। हाँ 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू दी पावर 2, इसमें यहाँ पर भी लूप रन कर रहा है। हाँ ये भी सही है सर। 8 में 2 टू दी पावर 3, यहाँ पे भी लूप रन कर रहा है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कैन आई से 2 टू दी पावर x इज लेस देन इक्वल टू n, तभी लूप रन करेगा, नहीं तो लूप खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। 2 to the power x less than equal to n। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी जाके लूप रन कर रहा है, नहीं तो लूप खत्म हो जा रहा है, एल्स लूप इज गेटिंग टर्मिनेटेड। तो मुझे x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, कब तक लूप चलेगा, x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हाँ सही। तो हाँ तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा दो, log 2 2 टू दी पावर x इज लेस देन इक्वल टू log 2n, ठीक। x का मैक्सिमम क्या आ रहा है, इस ये सिंप्लीफाई होके x इज लेस देन इक्वल टू n, x इज लेस देन इक्वल टू log 2n आ रहा है।
मैं कह सकता हूं x मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप रन करेगा, x उसका वैल्यू है। x इक्वल्स टू व्हाट? मैक्स टाइम्स लूप विल बी रनिंग, व्हाइल लूप विल बी रनिंग। सही है या गलत? x तो x मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लूप रन करेगा। log 2n, log 2 10 करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है? ये 3 से ग्रेटर वैल्यू 4, मतलब मान लो 4 आ रहा है। x है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मेरा व्हाइल लूप रन करेगा। कैसे निकालेंगे? 2 टू द पावर x, ये आया ना, दोनों तरफ log लगा देंगे। दोनों तरफ log लगाने के बाद x क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू log 2n आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं बिग O ऑफ log n मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स मेरा लूप रन कर रहा है। सारे का क्या है? सारे का नंबर ऑफ ऑपरेशन तो 1 ही है ना। a को 1, a में 1 ऐड करो, 1 ऑपरेशन किया। i में 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 1 ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो ये जो 1 ऑपरेशन किया, कितनी बार किया? log n टाइम किया। n टाइम, log n टाइम। log n टाइम किया। while लूप कितनी बार चलेगा? log n टाइम चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसको एक और बार देखो, फिर कोई प्रॉब्लम होता है फिर देखते हैं। ठीक है, वीडियो को एक और बार देखो, जरूरत पड़े तो बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ओके सर। एनी अदर डाउट? तो ठीक है सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। एनी अदर डाउट? ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम ऑल ऑफ यू। नितांश, डाउट है?